welcome to Amazing Adventures Travel Vlogs. Today, the 14th of September, we'll be exploring one side of Lonavala, which covers Bushy Dam, Lions Point, and Ambi Valley. So, let's start and have a great journey. कमांडर काय झालं वरती जायचंय कारण काय ऍक्च्युली बंद ओके सो देर इज अ स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट वी वोंट बी एबल टू गो टुवर्ड्स Ambi Valley and explore this side of Lonavala due to certain restrictions imposed by the authorities, the police department. Pandemic is there, I know, but things are opening up. So this part of Lonavala should have opened up, but the authorities know the reason better than us. So let's go somewhere else. The beauty is like when you travel as a traveler and not as a tourist, you seldom get disappointed. So there is one more beautiful side of Lonavala which can be explored, and that's Lohargarh and Visapur Fort. It is on the outskirts, around in between 10 to 20 kilometers from Lonavala, but it's a wonderful place to visit, and it is a historical, it carries an historical significance as well. Let's go and enjoy. तरी मंगळवार आहे म्हणून ठीक आहे. आज जर रविवार असता तर इकडे पण हे बघ ट्रेन बघ काही जरा ट्रेन दाखवणे मोकळे मोकळे वाटतात रस्ते आता. मग हे केलेत ना रस्ते. हां आधी सिंगल रोड होता ना. हां एक्झॅक्टली. याच डोंगरावरती किक मारली आहे ना ती मी. हां 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 हां. हो याच्यावर मारुतीचं देऊळ आहे. असेच चढलेलं इकडूनच चढलेलं डायरेक्ट. हो हो हो. म्हणजे काय कसं चढलेले पहिले पायवाट पण काय नाही पायवाट काही नाही रे, असंच असंच ऍक्च्युअली एकदम टॉप वर गेलेले. हो ये बापरे. आणि 20 मिनिटात टॉपला होते. एवढं लवकर. हो आता पण जाऊ शकतो. हो चला आता पावसाळ्यात नाही जाऊ शकत. हां, slippery जाऊ असतं शकतो ना. सगळं. हा रस्ता सगळा सिंगल होता आधी. करेक्ट. ते राईटला काय इन्स्टिट्यूट आहे ना, ती सिंहगड इन्स्टिट्यूट आहे का काय? हो ना. हा एक्सप्रेस नाही जात. ये अभी हम लोग लोनावाला के बाहर आए हैं टुवर्ड्स पवना डैम एरिया. तो यहाँ पे एक फोर्ट है, लोहगढ़ फोर्ट. लोहगढ़ पहले आता है, उसके बाद विसापुर है. तो लोहगढ़ यू कैन लोहगढ़ इज मोटरेबल. विसापुर यू हैव टू ट्रेक फॉर सम टाइम. तो वी आर टेकिंग दिस जर्नी. हैव अ लुक. प्लेजेंट है एकदम, ग्रीन है एवरीवेयर, एंड इट्स नॉट रेनिंग राइट नाउ. सो there can be fog at some places, but since it is not raining, visibility is very nice, so enjoy the road. It's not straight, these are like winding roads. वो देखो सामने एक बड़ा डायनासोर दिख रहा है. Can you see the dinosaur in the dinosaur park? This has just come recently. कुछ साल पहले ये नहीं था. So this is the Relax Point Family Garden and Restaurant. उसके बाजू में डायनासोर पार्क है. डायनासोर्स पार्क. बढ़िया. दूर से अचानक ऐसे ग्रीन पैच में ऐसा डायनासोर जैसा क्रिएशन दिखा तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है ना. From cement roads we are back to tar roads.
The roads are done pretty well as compared to a few years back when this was like a कच्चा पक्का सड़क. Now this is properly motorable we can say. ये छोटा सा पैच है एक फॉरेस्ट का, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे. This is thick semi deciduous forest area. अब देखो अभी हम चढ़ान चढ़ेंगे थोड़ा और इतना मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया. बाहर हवा बहुत ठंडा है एंड द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट. So the ghat section begins. Yes, you can see that view of waterfall. अभी थोड़ी सड़क टूटी फूटी सी है. लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन कचरे रास्ते पे ही डाल देते हैं. तो सी टू इट दैट यू डोंट डंप एनीथिंग इन नेचर. यस, बढ़िया चढ़ान है. वैसे तो ये रास्ता 24/7 शुरू रहता है, लेकिन इफ़ यू वांट टू सी द ब्यूटी इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डू इट इन ब्रॉड डे लाइट. If you're doing it in the dark, there may be an occasional visitor from the wildlife which can be seen on the road. Vagoba temple just went, which indicates the presence of Vagoba here. So maybe a leopard can be sighted on this road. Now as we are going ahead, we see the road narrowing down and the incline becoming more steep, and the roads are also not in good condition, but our S-Cross will take it, no problem. So कैसा लग रहा है नेहल and Kairav? How do you feel Amazing. exploring this part? ब्यूटीफुल. और ये आ गया लेफ्ट साइड वी गो टू लोहगढ़ फोर्ट एंड राइट साइड वी गो टू पवना डैम. सो वुड प्रेफर टू गो टू लोहगढ़ फोर्ट. 5 किलोमीटर का है जर्नी एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग ट्रिप. सो हियर वी गो. कुछ सालों पहले हम यहाँ पे चल के जाते थे. देयर वाज अ स्मॉल पाथवे और चढ़ान बहुत थी, और अभी ये मोटरेबल रोड हो गया है. You have to keep on honking at turns because you never know. ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है तो at least they can be aware. बढ़िया ग्रेडियंट है. आहा. Myself and Nehal had come here long back on a motorcycle. I think कौन सा साल था नेहल? If we तभी Kairav was not born, so definitely before 2009. Yes, 2008. 2008 होगा शायद. Yes. We were preparing for Ladakh trip. Yes. और कोई नहीं है रोड पे. The roads are completely for us. चढ़ान लेकिन तेज है. So if you are new to ghats, just be careful that you drive the vehicle in low gear. Wow, क्या बढ़िया है. Wow, lush green, black tarmac, muddy patches on the side. That's Lohagarh for you. Lohagarh is called the Iron Fort, and it has a great history. Now the descent has started. The ghat section is over. Heavy rain has started too. To build up the challenge, we have rains accompanying us. They're pushing our spirit high. Yes, and this is a steep incline again.
Up, down, up, down, up, down. और क्या नज़ारे, fog and fog everywhere. Amazing beauty, amazing लोहगढ़. आप राइट साइड में देख रहे हैं, this is लोहगढ़ फोर्ट. One can also climb on this. It is accessible. And here we are. ये रास्ता अभी लोहगढ़ गांव की तरफ जा रहा है. It's raining. Oh, wow! We are greeted by a nice shower. रास्ते पे थोड़ा फॉग है, रेन है. और हमारे सिवा और कोई है ही नहीं है रास्ते पे. So the beauty is completely different. We get an exclusive feel that we are invited to this great historical fort. Yes. A grand welcome by the rains. और क्या चाहिए? और हमारे राइट साइड पे देयर इज अ वैली एंड यू कैन सी द पवना डैम. पवना लेक है यहाँ पे. ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारे है. इट्स ऑल फॉगी हियर. एकदम बीच में वो लेक के यहाँ पे थोड़ा सनलाइट है. दिस इज अ वाटर बॉडी, अ ह्यूज वाटर बॉडी कॉल्ड पवना लेक. ये कुछ साल पहले ये सारे रास्ते, मतलब इट वाज जस्ट नॉर्मल पाथ, रॉकी पाथ, मडी पाथ. तो बारिश में यहाँ पे तो पैर इतना अंदर चला जाता था, एटलीस्ट नी तक आपका पैर अंदर धंस जाता था. उसके बाद यस, यू कैन सी दिस बुल. बारिश का मजे ले रहे हैं. यूनिटी इन्फिनिटी, आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट. यूनिटी इन्फिनिटी, मे बी सम resort or some wellness related stuff, or maybe a bungalow scheme, we don't know. Yes, ये बढ़िया लग रहा है. वाह. अगर वीकेंड्स में यहाँ पे आएंगे तो बहुत भीड़ होती है. तो वी आर ऑन अ वीकडे, ट्यूसडे 14th of September 2021. तो कोई भीड़ ही नहीं है यहाँ पे. रास्ते पे से कैसे चल के जा रहे हैं. दे कैन फ्लाई बट दे जस्ट वॉकिंग एंड क्रॉसिंग द रोड. देयर इन अ ग्रुप ऑफ 4 नाउ. क्या बढ़िया है. चले गए अंदर. जानवरों से पास मांगना है आपको तो उनके बाजू में स्लोली जाके गाड़ी चलानी है, ना कि हॉर्न मार के उनको डराना है या धमकाना है. Sort of, they give you the path. So animals are more understanding than humans. This is what we have also found. True. हॉर्न मार के उनको तकलीफ दे के उनसे रास्ता लेने में कोई मज़ा नहीं है. So have patience. They will definitely give the way. And they are no more interested in dealing with humans. Yes. ये 2 रास्ते हैं. कहाँ जाना है? ऊपर. चलो ऊपर का रास्ता लेते हैं. यस. तो ये बैल महाराज बीच में रुक गए हैं. अब देखो कैसे साइड देंगे ये. प्यार से मांगो तो प्यार से साइड मिलेगी. हॉर्न मारोगे तो वो देखो ये पीछे के ड्राइवर है, कोई टूरिस्ट ड्राइवर, हॉर्न मार के साइड ले रहे और हमने बड़े प्यार से साइड ली. This is Logarh. We have reached to the base. We have reached the base. हाँ, so all these shops आणि म्हणजे हे सगळं बंद आहे. Now it is closed actually. See the access to Logarh. Restaurants and everything is closed. Oh.
This is also closed. This is closed because of corona. जगह अभी भी बंद है कोरोना को लेके. So the best answer to be given to public is कोरोना की वजह से बंद है. ठीक है. नाही आणि म्हणून मग इकडची दुकानं काय करणार ना, सगळंच बंद करून टाकणार. माहिती वी यूज टू ईट हिअर. Yes. या घरात आपण जेवलोय. इकडे कैरवणी स्वतःचा फोटो आहे. म्हणजे तो इकडचा आहे. हो 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 मला वाटलं इथे महाबळेश्वरचं आहे. ना, सगळंच बंद आहे. ये बघ काय सुंदर फोटोग्राफ है. ये बघ हसन, कितना बढ़िया ये बनाया हुआ है. छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए विराजमान. ट्रू किंग ऑफ इंडिया, ग्रेट किंग ऑफ इंडिया. मोटरेबल आहे तर जाऊया. एक गाडी गेली आहे पुढे. हा गुजरातची गेली रस्ता ना ती. हो, हा रस्ता जातो विसापूर मार्गे. विसापूर फोर्ट सुद्धा ट्रेकर्ससाठी एक खूप छान paradise जागा आहे आहे. sort हो, of, yes. सो आम्ही पण नवीन आहोत या रस्त्यावरती. बघूया कुठपर्यंत आपल्याला Yes. मार्ग मिळतो. बकरिया शुक्रिया. Yes, the local RTO waiting, nodding their head and telling us to go. थँक यू. मध्ये और ये देखो क्या सडन ग्रेडियंट है. वाओ क्या स्लोप है. सुपर, वेरी नाइस. हो 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 हो. आणि वरती हा एवढा विशाल. यस, हो हो हो. ये है विसापुर फोर्ट. आप देख सकते हैं. पार्किंग विसापूर. वाय टू पार्क. हा रस्ता साधारण कधी झाला पण हा विसापूरचा रस्ता कधी झाला हा आता झाला आहे. है ना. आधी आधी आता यायचं तर पायी यायचं सगळे. आता या सर आपण वॉटरफॉल पर्यंत जाऊया तिथे गाडी जाऊ. ठीक आहे, ठीक आहे. या वॉटरफॉलला जाऊ. हो हो आलो. छत्री आहे का आपल्याकडे. छत्री आहे, 2 जॅकेट आहे. जॅकेट आहे. हो, हे स्विमिंग पूल पहा. छोटस हे आहे. विराज फार्म. हे काय काही गाड्या कोणी येणार नाही, घेणार बी नाही. तरी पार्किंगची जागा आहे ही. रुततायत पाय.
दुसरा पण आला. उघडलं ना आता. अरे इकडे बघ, इकडे बघ. हा तो बघ काय धावत येतोय. ओ माय गॉड. दे 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 दे. अरे थांबा, अरे तुम्ही माझे की नको. कैरव मागे नको येऊ, तू खाली टाक आणि बाजूला हो. चल तू बाजूला होता, जास्त लांब राहू नको. संपला.